Okay, can you hear my voice? Atul bhai, you can please go ahead. Okay. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિલોજ મુંબઈ ના ઉપક્રમે આયોજિત મદ્રાસ ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આ તહેવારો ભવ્ય પ્રતીકવાદ છે. આ વક્તા શ્રી ધ્રુવ, શ્રી કૌસ્તુભ ભડભડેજી, રાજેશ્વરીબેન દવે તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરીશું. વૈશ્વિક પ્રાર્થના કરાવું છું. ઓ હિડન લાઈફ વાઇબ્રન્ટ ઇન એવરી એટમ. O hidden light, vibrant in every atom. ઓ હિડન લાઇટ શાઇનિંગ ઇન એવરી ક્રિએચર. O hidden light, shining in every creature. ઓ હિડન લવ એમ્બ્રેસિંગ ઓલ ઇન વનનેસ. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજની સભાની શરૂઆત શ્રી તરલભાઈ મુનશી કરાવશે. તરલભાઈ આપનું સ્વાગત છે. Thank you so much, Atul bhai. और वो really तबीयत भी खराब थी, बुखार है अभी भी, लेकिन फिर भी जुझारू रूप से त्रिवेणी की शुरुआत कर रहे हैं. तो बिना समय गवाते हुए मैं सोचता हूँ कि हम शुरुआत करें. सर, मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ, तो आप पीपीटी वगैरह दिखा सकते हैं. So you can go ahead, Dhruv. I will introduce all the three of you later on, so we will save time because you are not well. Namaste and welcome to all of you. This PPT was actually prepared a couple of months ahead, and I have touched it. I have added portions for Navaratri as well as for Diwali in this. But the PPT doesn't have the portions for Navaratri as well as for Diwali in this. But the text which I have shared with you has the portions. With this rider, I'd like to start this presentation. Festivals, its social importance, impact, Ganesha Chaturthi, and principles of theosophy. That is the main subject, and it is more to touch on the macrocosmic aspect of the festivals. So, is there something which I am missing? Now, festivals in general have three parts to it. The festivals in general, that is what this topic will be all about. The next topic will be on the Ganesha Chaturthi, worship and symbolism. Navaratri, its worship and symbolism. And also DEEPAVALI, its worship and its symbolism. And the last part will be the connect with theosophy. Now, a festival. Dhruv, we can stop after 18 minutes. We'll just. Yes, I will stop. A festival is an extraordinary event celebrated by a community. And there are centers on some characteristic aspects of a community, its religion or cultures. And it is often marked by a local holiday or a national holiday. So these are the three ascribing events or ascribing characteristics of a festival. One, as I said, is extraordinary event celebrated by a community. It has certain characteristic aspects of a community, its religion and its culture.
and it's often marked by a national holiday. Now, the term festival, as such, if you go back in time, starts off in the 16th century as the festival die in English or festival in French. And the occasion is followed by a feast which came into the usage in the 13th century itself. Now, that said, we must understand festivals have been there from time immemorial, but the word festivals, the word festivals, comes only from the 13th century, rather more precisely the 16th century. Now, one thing we need to understand is how festivals are linked with the various cycles of nature. The famous astronomer Carl Sagan, for instance, refers to a South Indian festival called Pongal. It's a harvest festival, which is otherwise called as Makar Sankranti in the north of India, as a festival where there's rejoicing in the fact that there are cycles of nature, and and because of a harvest, there is a rejoicing for everybody. Everybody stands to gain, and that is why they feel that it is a time for a lot of festivities. And when I say cycles of nature, it also marks the peak of winter, and after which the, the belief is that the sun starts moving to the Uttarayanam, from Dakshinayana to the Uttarayanam. So this is a cycle of nature. And this is something which people like to observe because A, you've had a good harvest, and B, it's the end of winter, and therefore it is something to be celebrated. So also with Holi, the spring festival, which is another cycle of nature. Now let's not forget that there's always a feast attached to it. There's always eating, whining, drinking, everything attached to it. And this is a traditional thing. Across the world, across India, there's always some celebration of feasting attached to a festival. And having said about the cycle of nature, we must admit that the Indian summers keep people indoors for most part of the day. And with the monsoons come the next set of festivals, where people want to break free from the hot spell. To put it in a nutshell, between the Independence Day and the Republic Day are most of the festivals of India. Now, going into the macroscopic symbolism of festivals. The macroscopic symbolism is about using a visible and tangible elements to represent abstract concepts, ideas, or values. Now, when I say macroscopic symbolism, I mean the larger picture of this festival. The larger picture of this festival, and the symbolism that is involved in this festival, is about using visible and tangible elements to represent a variety of abstract concepts, ideas, or values. Now, certain things are easy to perceive, certain things are not easy to perceive. And the festival is a powerful tool for communication of things that are easy or not easy to perceive. So, therefore, here is a tool, a festival is a tool that allows people to convey a meaning, evoke emotions through the use of recognizable symbols in the physical world. And this can be seen in various contexts, by way of literature, by way of art, by way of religion, science, and even everyday life. Now, coming to
certain other aspects of festivals which we observe in India. We observe in the month of Shravana Masa, when people first offer obeisance to their ancestors, that culminates in Raksha Bandhan in the north, and with the Varalakshmi Vrada and the Yajñopavitopakarma in the south. Now, this festival or an observance is also to mark the end of summer and the beginning of the monsoons. And by the time the monsoon picks up, we have two important festivals. That is the Krishna Janmashtami and the Ganesha Chaturthi. And of course, some of them consider entire monsoons risky and limit all activity under the Chaturmasya till Navaratri, which coincides with Dakshinayana. From them then till Uttarayanam, you will see a series of festivals, two major harvesting festivals for farmers, and these will especially the festival of Deepavali. The festival of Deepavali is a major accounting festival in the sense, for businessmen, Deepavali is the closure of accounts on the day before Deepavali, and from the profits they have got, they rejoice, they give gifts to everybody, and the day after Amavasya they open fresh accounts. So this is a major festival for businessmen in the country. Now, what does Ganesha Chaturthi mean? Now, Ganesha, also known as Ganapati, Ganesha, Lambodara, Pillayar, Vigneshwara, Vinayaka, what does he symbolize? Does Ganesha symbolize a real being or class of entities rather than simply a flight of artistic fantasy? When I say artistic fantasy, it's just that you have an elephant-headed god with a big belly. Is it just an artistic thing? Or is it something deep inside? Does he symbolize something really deep inside? A hint lies in Ganesha's name, Ganapati or Vinayaka, indicating his function as the leader of the celestial hordes, Ganas, an honor bestowed on him by his father Shiva. Now, when I say Ganas, it is a huge set of little creatures who are always around Lord Shiva, and Ganesha is the leader of that entire celestial horde of Ganas. Now, I must also say, when I talk about Ganesha symbolizing, until the early 20th century, the Europeans looked at Ganesha as the belly god idol. They only looked at him from an artistic perspective. It was only much later we started looking at the macroscopic and the symbolism that we bring into Ganesha. Now, and when I say the macroscopic symbolism is something which the Europeans never understood, it is much later when they got to read about Indian literature, they got to understand more about Ganesha and about the various macroscopic symbolism that Ganesha Chaturthi conveyed. Now, Ganesha is known by at least 108 names. Now, that's what Wikipedia says, perhaps even more, I do not know. He is considered to be the god of new beginnings, wisdom and luck, and the remover of obstacles. The date of Ganesha Chaturthi falls on the 4th day of the waxing moon, that is Shukla Chaturthi, in the Hindu lunar month of Bhadrapad. That is, it comes sometime August or September each year. And according to the Hindu lunar calendar, the festival is celebrated for 10 to 11 days. And the biggest spectacle taking place on the last day, that is the festival named Ananta Chaturdashi. Now, Ganesha Chaturthi has its own mythological origins. There are several stories relating to its birth. In fact, there are at least 5 such legends as far as Ganesha Chaturthi is concerned. One such story is that of Shiva, the ascetic,
not giving a child to his consort Parvati, she creates one of turmeric and sandal paste and the other anointments from her body and breathes life into it, giving it the status of a Gana, and the rest of it is well known. This is a well known story of Ganesha. The other story of Ganesha is Shiva creates a child in his own image for the pleasure of Shakti. But since the child looks very much like Shiva, the consort replaces, that is Shakti replaces it with that of a baby elephant. This is another story. The third story of Ganesha, Ganesha's birth, is with Parvati's intense penance to Vishnu. A child is born. When the Devatas come to visit her, Shani also comes along. Unfortunately, when Shani sees the baby, the child's head falls off. Seeing the grief-stricken Shiva and Parvati, Vishnu, the brother, immediately steps in and replaces it with a young elephant's head. Now, in the Hindu mythology, Vishnu is supposed to be the brother of Parvati, and he immediately steps in to replace it with a young elephant's head. Now, the fourth story, once Parvati used bath water is thrown into the river Ganges. The water is drunk by the elephant-headed goddess Malini, and she gives birth to a child with five elephants' head and 4 arms, and that is fused later into one by goddess Parvati. So this is another story of Ganesha. And the final story of Ganesha, once while traveling through earth, fascinated by elephants making love, Shiva and Parvati assumed the form of elephants, and thus was born Ganesha. So these are some 5 different stories from different parts of India on the worship of Ganesha. Now, coming to the macroscopic symbolism of Ganesha worship. Gana, Isha. Ganesha, Eka Ganapati, is typically depicted with a large belly and a small mouse as his vehicle. His large belly symbolizes the ability to digest and overcome all obstacles and challenges, while the mouse represents his ability to control even the smallest of obstacles. The combination of these symbols reinforces the idea that Ganesha can clear all obstacles of all sizes. So Ganesha is also referred as Vigna Harta, which means the one who removes obstacles. And from this comes Vigna Ishvara or Vigneshwara. Vigna Harta becomes Vigneshwara. Thus, the devotees believe that by worshipping Ganesha, he removes hindrances or challenges in their lives, whether they are related to personal, professional, or spiritual matters. Ganesha is thus the remover of obstacles. The devotees here could be Shaivite, could be Vaishnavite, could be Buddhist, Sikh, or Jain, who propitiate him first, seeking his sanction in the invocation of their chosen deities. Thus, being the supreme remover of obstacles, he is considered as the Vinayaka. Can I stop with this? Yes, you may. You're done? No, do I go on further to the You have 3. You have 3 minutes almost. 3 minutes? Okay, fine. 4 minutes. Continuing with the macroscopic symbolism of Ganesha worship. Thus, it is an immortal undertaking which is accomplished with solemn success and stands as an archetypal example of the teaching that no sacrifice is too great for a noble cause, and the resourceful know no impediments. In other words, it is trying to say that every problem has a solution. For the man who is resourceful, he always will find a solution, and Ganesha is
the primordial person who will help you in this aspect. He is that aspect of cosmic intelligence which aids the awakening and growth of those who are divinely disposed. In a sense, when we talk about cosmic intelligence, we talk about the logos, we talk about everything way beyond our human perception, our simple human perception. And it is this which aids the awakening. Is that aspect of this huge cosmic intelligence which aids the awakening and growth of those who are divinely disposed. So, unless you are divinely disposed, the cosmic intelligence is not going to aid you. So, a prerequisite for the cosmic intelligence to aid you is to have some sense of divinity in you. This is a prerequisite, if I may clarify that. And Ganesha apparently helps the wicked also, but ultimately arrests their untoward undertakings. In this sense, Ganesha is called the Vigneshwara, the Lord of obstructions. He is capable of creating hindrances as well as clearing of hindrances. Sometimes, what is sought for by the devotee is not sanctioned. The disappointment brought about thereby is no doubt poignant. Later, it's realized that the seeming obstruction is a blessing in disguise. Vigneshwara wields the affairs of the world in such a way that greater evils of life are warded off through intervention of lesser evils. To explain this, let me put it in a simple words. Sometimes we may want something so badly, and despite our incessant prayers to God Almighty, to Ganesha, He may not let it happen. He might just put hindrances and stop it. And after all, He knows better. He knows why He's putting those hindrances. Maybe it was to prevent something worse. And that is why the smaller hindrances are put. A, it makes you a better human being, makes you a tougher person. And B, it is obviously to prevent something worse. So if you can take it in that spirit, then definitely you will be happy being a devotee of Ganesha. The ceremonial sanction and support of Vigneshwara is sought after in all new undertakings. Whatever is undertaken, ignoring the Lord of wisdom, is bound to meet with impediments, and therefore devotees pay respect in various ways. Now, here are some physical activities which people normally do to invoke the blessings of Ganesha. People normally circumambulate the Ganesha image and they perform the knocking of the head 3 times or maybe even 10 times, holding the earlobes with hands in a crisscross fashion and doing a kind of sit-ups as a mark of submission and obedience. Now here, while squatting, one breathes out and breathes in deep while returning to the standing posture. And this is what they call the super brain yoga. Now, in a child, such sanctification arouses the imagination and creates a living contact between the visible human and the invisible superhuman. It thus induces devotion in little children while teaching them to share the prasada with one and all selflessly. One more minute. Yeah. The enlightened man invokes Ganesha through intense mental invocation. His inward prayer consists of the intention to act with fervent wish that his undertaking be in tune with the cosmic harmony and the divine will, and that if it should be counter to it, it might as well meet with the fate it deserves. Now, we are not being fatalistic here, just trying to say that there is a deep prayer within, and you have to be in tune with the cosmic harmony and divine will. And sometimes, as I said before,
Despite your fervent prayers, things may not work, but you have to take it in the lighter vein and keep on trying. A devotee is aware of the potent force that streams through the nation and recognizes that through success and failure alike, he can learn progressively how to set his feet more firmly and squarely on the path. He is also keenly appreciated the symbolic attributes of the elephant-headed belly god. It is this it is this potent force that we all seek to strive at, so that we recognize through success and failure alike that we can learn progressively and set our feet firmly and squarely. Stop here. And I will introduce you also. Dhruva is a lawyer. Yeah, this is the last slide. Okay. Yeah. Please go. Now, the last slide on the macroscopic symbolism of Ganesha worship is he realizes the power within the trunk. A devotee realizes the power is within the trunk. For elephant, the power is in the trunk. And this is a channel of experience par excellence. The symbolic significance of this is suggested in the yoga system, wherein Muladhara, the root center of the mortal body, is related to the elephant or Ganesha, as well as to the bottom of the spine and the elimination center. The root center represents the earth and the sense of smell, as well as cohesion, obstruction, and bone. Thus, Ganesha stands at the beginning of the pilgrimage through the chakra centers, and it is he who must be propitiated to remove all obstacles. Thank you, Dhruva. And I quickly introduce both of you, sir. Dhruva is a lawyer by profession with a passion of radio broadcasting. And he's also guiding tourists in heritage spaces. He's a THEOSOPHY member since 1988 of Chinfolk Lodge, Tamil Nadu. He also volunteers in programs related to conversion of natural heritage and monuments. So he's always into some kind of deep study and always bring something inner side of a study also. KAUSTUBH BHADBHADE ji is IIT Bombay से मैकेनिकल इंजीनियर बने 1981 में. He has also worked as HR के पद पर भी कार्य किया है. वर्तमान में वे महाराष्ट्र थियोसॉफिकल फेडरेशन और थियोसॉफी सोसाइटी पुणे लॉज के भी सचिव हैं. और यही नहीं, वे पारिवारिक परंपरा से भी थियोसॉफिस्ट हैं. उन्हें थियोसॉफिस्ट यानी ब्रह्म विद्या विरासत में परिवार से प्राप्त हुई है. बहुत एक्टिव हैं और काफी सारा कार्य इस वक्त वो कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में. आइए सर, आप अपनी मराठी में आज का विषय बताइए. धन्यवाद. How much time do I have? जी, please go ahead. How much time do I have? You have time. 15 minutes? Yeah. Go ahead. Okay. Just now. Thank you so much. The text was very well written and very well studied as well. So I did find a lot of things to absorb myself. Wow. And, it was really worth it. And sir, you can take Thanks to the writer. just now. Yes. I'm going to translate or transliterate the whole thing in Marathi, and I hope the Marathi version is as good as the English version. But let me see, and the time also is half of it. So I'll have to. So you can go ahead. Till he has completed, you can go ahead. Yeah. सण म्हणजे ढोबळपणाचे प्रतीक. ही चर्चा सण, त्याचे सामाजिक महत्व, प्रभाव आणि थिओसॉफीशी संबंधित तत्वे समजून घेण्यासाठी आपण करणार आहोत. सण हा कार्यक्रम एखाद्या समुदायाद्वारे साजरा केला जातो आणि त्या समुदायाच्या काही विशिष्ट पैलू किंवा पैलूंवर समुदायाच्या धर्म किंवा संस्कृतीवर तो केंद्रित असतो. उत्सव या शब्दाचा सर्वात जुना संदर्भ 16व्या शतकात आहे. पण अगदी कार्ल सेगन नावाचे एक खगोलशास्त्रज्ञ होऊन गेले.
त्यांच्या मते पोंगल हा दक्षिण भारतातील एक कापणीचा सण, ज्याला उत्तर भारतातील लोक मकर संक्रांतही म्हणतात, ज्या वेळेला समाज निसर्ग चक्रातील बदलाचा आनंद घेतो. होळी बरोबर वसंत ऋतूचा सण ही निसर्गाचे आणखीन एक चक्र आहे. ही वेळ साजरी करण्यासाठी मेजवानी असायची आणि इथे एक पैलू लक्षात घ्या, तो म्हणजे ढोबळ प्रतीकवाद. ढोबळ प्रतीकवाद म्हणजे अमूर्त कल्पना किंवा मूल्य दर्शवण्यासाठी दृश्यमान आणि मूर्त घटक वापरणे. हे एक शक्तिशाली साधन आहे जे लोकांना भौतिक जगात ओळखण्यायोग्य चिन्हे वापरून अर्थ व्यक्त करण्यास आणि भावना जागृत करण्यास मदत करते. हे साहित्य, कला, धर्म, विज्ञान आणि अगदी दैनंदिन जीवनासह विविध संदर्भांमध्ये सापडते. निसर्ग चक्राविषयी आपल्याला कबूल केलंच पाहिजे की भारतीय उन्हाळा असा आहे की बहुतेक लोक त्यावेळेला घरात राहत असतात. पावसाळ्याबरोबरच पुढचे सण येतात तेव्हा लोकांना ह्या उष्णतेपासून मुक्ती मिळते. कोणत्याही क्षणाच्या आधी आपण श्रावण मास पाळतो. त्या अगोदर लोक त्यांच्या पूर्वजांना नमन करतात. श्रावण मासाची सांगता उत्तरेकडील भागात रक्षाबंधनाने आणि इतर व्रतांनी करतात. पावसाळ्यात अगोदर 2 महत्वाचे सण असतात आणि त्यानंतर 2 इतरही महत्वाचे सण येतात. उदाहरणार्थ कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी. अर्थातच अत्यंत धर्माभिमानी लोक संपूर्ण पावसाळा हा जोखमीचा काळ मानतात आणि म्हणूनच चातुर्मास्य कालावधीत त्यांचे कार्य नवरात्रीच्या प्रारंभापर्यंत मर्यादित ठेवतात, जे सूर्याच्या दक्षिणायनाशी जुळत. त्या कालावधीपासून ते उत्तरायणापर्यंत ही सणांची मालिका आहे, कारण तुमच्याकडे शेतकऱ्यांसाठी 2 मोठे कापणीचे हंगाम आहेत आणि व्यावसायिकांकरता हिशोबाचे खाते बंद करण्याचा दिवस आहे. आज आपण गणेश चतुर्थीकडे वळूया. गणपती, गणेश, लंबोदर, विघ्नेश्वर, विनायक इत्यादी कशाचे प्रतीक आहेत? गणेशाची किमान 108 नावं आहेत, विकिपीडिया ते देतं. त्याला नवीन सुरुवात, बुद्धी आणि नशिबाचा देव मानलं जातं आणि अडथळे दूर करणारही मानलं जातं. गणेश हे केवळ कलात्मक कल्पनेच्या उड्डाणापेक्षा वास्तविक अस्तित्वाचे किंवा घटकांच्या वर्गाचे प्रतीक आहे का? गणेशाच्या नावात गणपती किंवा विनायकामध्ये त्याचे उत्तर आहे, जो आकाशीय सैन्याचा गण म्हणजे नेता आहे. त्याला हा सन्मान त्याच्या वडिलांनी म्हणजे शिवांनी दिलेला आहे. गणेश चतुर्थीची तारीख हिंदू चंद्र महिन्यातील भाद्रपद, ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर मध्ये शुक्ल चतुर्थी 4थ्या दिवशी येते. हिंदू चंद्र दिनदर्शिकेनुसार हा सण 10 किंवा 11 दिवस साजरा केला जातो आणि शेवटच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीने त्याचं समापन होतं. गणेशाच्या जन्मासंबंधी 5 दंतकथा आहेत. त्या दंतकथा मी आता हे करणार नाहीये, पण माझे काही गोष्टी त्याच्यात थोड्याशा ऍड करणार आहे. एखादा गणपती किंवा हत्ती समोर तुमच्या आणा, काय दिसतं तुम्हाला? मोठं डोकं, खूप बुद्धी क्षमता, डेक्स्टेरिटी म्हणजे विविध हातांनी काम करण्याची तयारी, विविध प्रकारे काम करण्याची तयारी आणि सेन्सिटिव्हिटी जी त्यांच्या सोंडीत आहे. सो जन्मकथा याच्या मागे आपण जाण्याच्या ऐवजी हे आपण वेगळ्या प्रकारे त्याच्याकडे बघितलं. आणखी 2 महत्वाचे सण बघू. एक शैव नवरात्री आणि दुसरी दीपावली. गणेश चतुर्थी नंतरच्या महालय अमावस्येनंतरचा शैव नवरात्री हा सर्वात महत्वाचा सण आहे आणि अर्थातच चंद्र कॅलेंडर मध्ये दीपावली नंतर येतो. आध्यात्मिक संदर्भात नवरात्री म्हणजे हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी निसर्गातील स्त्री शक्ती किंवा प्रत्येक मनुष्यामध्ये कोमल शक्तींचे आवाहन असते. सरस्वती, लक्ष्मी आणि दुर्गा या स्त्रीलिंगाच्या 3 आयामांचे प्रतीक आहे. तेथे निरोगी हिवाळ्यासाठी योगदान देणारे घटक म्हणजे पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्र. पृथ्वी माता तमस मानली जाते, सूर्य रजस आहे आणि चंद्र सत्व आहे. ते अस्तित्वाच्या 3 मूलभूत गुणांचे प्रतिनिधित्व करतात. ऋग्वेद म्हणते की सृष्टीपूर्वी एक शून्य होते,
या काळोख्या रात्रीमधून सृष्टीची सुरुवात ध्वनी मूळ आदिम ध्वनी शब्दाच्या कंपनाने झाली. अगदी उपनिषदांमध्येही या 9 रात्रींचा उल्लेख अस्तित्व आणि शून्यता असा आहे. नीती शून्य मानवी जीवनाला ऊर्जा देते आणि भावनांवर केंद्रित करते. 9 दिवसांचे एक विशेष ध्यान असते, ज्यामध्ये रात्रभर बीज मंत्रांचे पठण केले जाते. असे केल्याने योगाचे एक विशिष्ट तत्व साध्य होते. दिवाळी किंवा दीपावली सर्वत्र हिंदूद्वारे साजरा केला जाणारा प्रकाशांचा वार्षिक सण आहे. हे अंधारावर प्रकाशाचा आणि अज्ञानावर ज्ञानाचा आणि जड स्वभावावर चांगल्या वेळचा विजय दर्शवते. विक्रम संवत कॅलेंडर मधील ऑक्टोबरच्या मध्य आणि नोव्हेंबरच्या मध्यामध्ये हिंदू चांद्रमास कार्तिकातील सर्वात महत्वाचा दिवस अमावस्या. पारंपरिकपणे व्यापारी आपली खाती दिवाळीच्या आदल्या दिवशी बंद करतात आणि कमावलेल्या नफ्यातून सर्व हिशोब पूर्ण झाल्यावर यशस्वी व्यवसायासाठी आणि संपूर्ण समाजासाठी काम करणाऱ्या सर्वांसाठी योगदान देतात. सामान्यतः इतर सणांप्रमाणे लोक आपली घरे स्वच्छ करतात, देवी लक्ष्मीच्या कौटुंबिक पूजा मध्ये भाग घेतात आणि अमावस्येच्या दुसऱ्या दिवसापासून नवीन लेखावर्षाची सुरुवात करतात. कमावलेला नफा वाटून घेतला जातो आणि लोक विशेष खाद्यपदार्थ, भेटवस्तूंची देवाणघेवाण आणि दिवे, मेणबत्त्या, फटाके यांचा आनंद घेतात. अंधाराशी संबंधित हिंदू देवतांमध्ये रात्रीची देवी आणि राहू, अंधार आणि ग्रहणांची खगोलीय देवता यांचा समावेश होतो. आता आपण गणेश चतुर्थी मधील प्रतीकवाद बघूया. गणईश उर्फ गणपतीला सामान्यतः मोठे पोट आणि लहान उंदीर त्याचं वाहन म्हणून चित्रित केले जातं. त्याचे मोठे पोट सर्व अडथळे आणि आव्हाने पचवण्याच्या आणि त्यावर मात करण्याच्या क्षमतेचे प्रतीक आहे, तर उंदीर अगदी लहान अडथळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता दर्शवतो. या चिन्हांचे संयोजन गणेश सर्व आकाराचे अडथळे दूर करू शकतात या कल्पनेला बळकटी देतात. म्हणून गणेशाला विघ्नहर्ता म्हणजे अडथळे दूर करणारा असेही संबोधित केले जाते. भक्तांचा असा विश्वास आहे की गणेशाची उपासना करून ते त्याच्या जीवनातील कोणतेही अडथळे किंवा आव्हाने दूर करण्यासाठी त्यांचा आशीर्वाद घेऊ शकतात, मग ते वैयक्तिक, व्यावसायिक किंवा आध्यात्मिक बाबींशी संबंधितही असतील. गणेश हा अशा प्रकारे अडथळे दूर करणारा आहे. बौद्ध, जैन धर्माचे भक्त देखील त्यांच्या निवडलेल्या देवतांच्या आमंत्रणासाठी त्याची मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रथम त्याची प्रार्थना करतात. अशा प्रकारे अडथळे दूर करणारा सर्वोच्च असल्याने त्याला विनायकही मानले जाते. तो वरवर पाहता दुष्टांना ही मदत करतो, पण शेवटी त्यांच्या अयोग्य उपक्रमांना अटकावही करतो. या अर्थाने गणेशाला विघ्नेश्वर, अडथळ्यांचा देव म्हटलं जातं. तो अडथळे निर्माण करण्यास, तसे अडथळे दूर करण्यासही सक्षम आहे. काही वेळा भक्ताकडून जे मागितले जाते ते मंजूर होत नाही, त्यामुळे आलेली निराशा मार्मिक आहे यात शंका नाही. परंतु योग्य वेळी हे लक्षात येते की दिसणारा अडथळा हा वेगळ्या वेशात वरदानच आहे. विघ्नेश्वर जगाचे व्यवहार अशा प्रकारे चालवतात की जीवनातील मोठ्या वाईट गोष्टी कमी वाईटांच्या हस्तक्षेपाने दूर होतात. सर्व नवीन उपक्रमांमध्ये विघ्नेश्वराची औपचारिक मंजुरी आणि पाठिंबा मागितला जातो. बुद्धीच्या परमेश्वराकडे दुर्लक्ष करून जे काही केले जाते ते अडथळ्यांना सामोरे जाणे बंधनकारक आहे आणि म्हणूनच भक्त विविध प्रकारे त्याचा आदर करतात. काही जण भक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या प्रतिमेला आदर व्यक्त करतात. कोणी कान उजव्या हाताने धरतो, डाव्या हाताने उठाभाष्या काढतो, कोणीतरी डोक्यावर 3दा ठोका मारतो. पण ह्या सगळ्या ह्याच्यातून जे दिसतं ते प्रभावी सुपर ब्रेन योग हे आपल्याला दिसून येतं आणि हे आता नवीन लोक सांगतायत. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे लहान मुलांमध्ये असे काही पवित्रीकरण केल्याने त्यांची कल्पना शक्ती जागृत होते. दृश्यमान आणि अदृश्य यांच्यात एक जिवंत संपर्क निर्माण करते. त्यामुळे लहान मुलांमध्ये भक्ती निर्माण होते. हे प्रत्येक मुलाच्या त्यांच्या सोबतांच्या
निरोगी प्रेमळ नातेसंबंधांच्या आग्रहाला व्यावहारिक रूप देते. देवतेला अर्पण केलेले खाद्यपदार्थ देणे आणि त्यांचे आपापसात वाटणी करणे यासारखी कृत्ये अंगभूत स्वार्थापोटी अडथळा दूर करण्याचे साधन बनतात. आत्मज्ञानी मनुष्य तीव्र मानसिक आवाहनाद्वारे गणेशाचे आवाहन करतो. त्याच्या अंतर्मनातील प्रार्थनेत त्याने केलेला उपक्रम वैश्विक सुसंवाद आणि देवी इच्छेशी सुसंगत असावा, आणि जर ते त्याच्या विरुद्ध असेल तर त्याला पात्र नशिबाचीही भेट होऊ शकेल अशी तीव्र इच्छा असते. अशा खऱ्या भक्ताला गणेशातून प्रवाहित होणाऱ्या शक्तिशाली शक्तीची खोलवर जाणीव असते आणि हे ओळखते की यश आणि अपयश सारखेच मार्गावर आपले पाय अधिक दृढपणे आणि चोखपणे कसे ठेवायचे हे तो उत्तरोत्तर शिकू शकतो. हत्तीचे डोके असलेल्या पोटाच्या देवाच्या प्रतिकात्मक गुणधर्माचेही तो मनापासून कौतुक करतो. त्याला कळते की शक्ती ही अनुभवाची वाहिनी आहे. योग पद्धतीमध्येही त्याचे स्थान आहे. थिओसॉफीशी संबंध. सिक्रेट डॉक्ट्रिन मध्ये गंधाच्या प्राथमिक अर्थाच्या संबंधात बद्दल बोलले जाते. इतर संवेदना पाणी, अग्नी, वायू आणि इतर यांच्याशी संबंधित आहेत. वासाच्या संवेदनामध्ये मिसळल्या गेल्या आहेत उत्क्रांत होण्याच्या मालिकेतील शेवटची. या शक्तिशाली अर्थाशी संबंधित स्मरण शक्तीचे स्वरूप हे मानसिक क्षेत्राशी संबंधित आहे आणि कामवासनेशीही. गणेश असा वैशिष्ट्यांचे प्रतीक असल्याने पृथ्वीवर आणलेला आकाश आणि निम्न सूक्ष्म क्षेत्राच्या शक्तींना मूर्त रूप देतो. त्यानंतर तो मार्गाच्या प्रवेशद्वारावर उभा असतो. तो दैवी बुद्धी तसेच संसारिक ज्ञान याच्यातील महत्वाचा दुवा किंवा अंतस्करण आणि दैनंदिन जीवनात ब्रह्मवाचेचे वेळेवर प्रकटीकरण यांचे प्रतिनिधित्व करतो. विश्वकोशीय थिओसॉफिकल शब्दकोश आपल्याला अधिक प्रगत आध्यात्मिक घटकांच्या पदानुक्रमात गणेशाच्या भूमिकेचा एक संकेत देते, जे विश्वाच्या व्यवस्थापनात सक्रिय आणि आत्मजागरूक भूमिका बजावतात. कदाचित खरा गणेश हा निसर्गाच्या शक्तीसारखा आहे, जसे जीवनाचे पोषण करणारा सूर्यप्रकाश, आपण श्वास घेत असलेली हवा किंवा आपल्याला प्रेरणा देणारे उदात्त विचार. तो आध्यात्मिक सूर्यापासून मानवतेपर्यंत आणि त्या पलीकडे पसरलेल्या महान साखळीचा एक भाग आहे. गणेश आणि त्याची खगोलीय सेना जाणीवपूर्वक आणि अथकपणे कार्य करतात, जेणेकरून आपण एक दिवस त्याच्या वैश्विक लीलांमध्ये सामील होण्यासाठी आध्यात्मिकरित्या शिकू आणि वाढू शकतो. नवरात्री. या 3 प्रमुख पायऱ्यांमध्ये अनेक किरकोळ पायऱ्या गुंतलेल्या असल्या तरी आत्म्याची वाटचाल 3 प्रमुख टप्प्यात झाली आहे. उत्क्रांतीच्या शिडीच्या निरनिराळ्या पायऱ्यांमधून आपल्याला वर जावे लागते तेव्हा आपण 3 बिंदूंवर किंवा थांबलेल्या ठिकाणी येतो. आपण त्यांना म्हणू शकतो जिथे आपल्या अस्तित्वाचा दृष्टिकोन आणि घटनेचे संपूर्ण परिवर्तन होते. महत्वाकांक्षी आत्म्याच्या आध्यात्मिक अस्तित्वाच्या या त्रिविध परिवर्तनांवर महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती या 3 देवतांचे वर्चस्व किंवा अध्यक्षता असते. 2 minutes left. ओके. या 3 प्रमुख शक्ती आत्म्याच्या शक्तींचे प्रतिनिधी आहेत, जे स्वतःला स्वातंत्र्याच्या अंतिम दिशेने वरच्या दिशेने प्रकट करतात, जेणेकरून आत्म्याच्या या स्वातंत्र्याच्या वाटचालीत ते त्याच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व गोष्टी घेऊन जातात. आत्मा कूच करत आहे म्हणून दैवी महात्म्याच्या वर्णनात आपल्याला मनोवैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या आपल्या अंतिम साक्षात्काराच्या गंतव्यस्थानाकडे नेले जाते. येथे वैयक्तिक हालचाली नाहीत, ही आपल्याशी जोडलेल्या प्रत्येक गोष्टीची एकूण हालचाल आणि जगातील कुठल्याही वस्तू खरोखर आपल्यापासून डिस्कनेक्ट केलेली नाही. जणू काही कापडातील धागा यांचा कापडाच्या धाग्याचा सर्व कापडाशी पूर्ण संबंध असतो. I think, sir, part 1 is over by now. Okay. Yeah. So, Yeah. permit me to go ahead with राजेश्वरी जी. राजेश्वरी, Yes. वेलकम. Yes. और आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि
आप BSc MEd हैं और more than 35 years of teaching experience, worked as principal and retired from Buklibhai School in Mumbai and also its junior college. She is interested in delivering lectures, different educational institute also, और त्रिवेणी में तो एक्टिव है ही, पर बहुत ही अच्छी वक्ता है और संगीत और गीत संगीत भी हर्षद भाई के साथ ये लोग हर मंगलवार करते हैं, पर जब त्रिवेणी होती है और समय होता है तो यहाँ भी आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हिंदी में आज इस विषय को पढ़िए और जहाँ तक ध्रुव भाई ने पढ़ा है वहीं तक पढ़िए। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका खूब खूब धन्यवाद कि त्योहारों की सीजन में ही ये त्योहार का वक्तव्य रखा है, इसलिए तरल जी को बहुत बहुत धन्यवाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं। त्योहार स्थूल प्रतीकवाद है। यहाँ बातचीत त्योहारों, उनके सामाजिक महत्व, प्रभाव और थियोसॉफी के जुड़े सिद्धांत को समझने पर केंद्रित है। त्योहार क्या है? एक समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक असाधारण कार्यक्रम है और यह उस समुदाय और उसके धर्म या संस्कृतियों के कुछ विशिष्ट पहलू या पहलुओं पर केंद्रित होता है। इसे अक्सर स्थानीय या राष्ट्रीय अवकाश मेला के रूप में मनाया जाता है। त्योहार शब्द या टर्म पहला संदर्भ उसका कब मिलता है? 16वीं सदी से मिलता है। अंग्रेजी में फेस्टिवल, फ्रेंच में दाई जैसे धार्मिक अवकाश का जिक्र, और इसके बाद एक दावत का आयोजन हुआ जो 13वीं सदी में प्रचलन में आया। उन्होंने कहा कि त्योहार अनादिकाल से चल रहा है, अभी से नहीं है, त्योहार अनादिकाल से चल रहे हैं, उनका स्वरूप बदलता रहता है। कार्ल सागन जो खगोल शास्त्री थे और लेखक भी थे, वो पोंगल को दक्षिण भारत में एक फसल उत्सव अर्थात उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति के रूप में संक्रमित कर दिया है, एक त्योहार के रूप में, जहां इस तथ्य पर खुशी मनाई जाती है कि प्रकृति में चक्र है। तो होली के साथ वसंत उत्सव भी प्रकृति का और एक चक्र है और इनके साथ हमेशा दावत जुड़ी रहती है। और यहाँ एक स्थूल प्रतीकवाद है और उसका यह संचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को भौतिक दुनिया में पहचानने योग्य प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से अर्थ बताने और भावनाएं पैदा करने की अनुमति देता है। इसे साहित्य, कला, फिल्म जो हम देखते हैं उसमें भी बहुत सारे त्योहारों के बारे गाने भी बनते हैं उसके लिए। धर्म, विज्ञान और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी सहित विभिन्न संदर्भों में उसे देखा जा सकता है। प्रकृति के चक्र में कहने के बाद यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा और यह करना होगा कि भारतीय गर्मियां ऐसी होती है, इन दिनों में लोग बाहर नहीं निकलते और मानसून आते ही, बारिश आते ही त्योहारों का अगला दौर आ जाता है। अब लोग गर्मी से मुक्ति पाना चाहते हैं। किसी भी उत्सव से पहले हम श्रावण मास मनाते हैं और उसके बाद पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसका समापन रक्षाबंधन और फिर वरद लक्ष्मी और यज्ञोपवीत कर्म के साथ होता है। जब तक बारिश बढ़ती रहती है तब तक हमारे पास दो महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, एक है कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा गणेश चतुर्थी। निसंदेह बहुत श्रद्धालु लोग पूरे मानसून को एक जोखिम भरा समय मानते हैं और इसलिए अपनी गतिविधियों को 4 महीने की चतुर्मास्य अवधि तक सीमित कर देते हैं, जो कि नवरात्रि की शुरुआत तक होती है, जो फिर उसकी अवधि में उत्तरायण तक यह उत्सव की एक श्रृंखला बनी रहती है। क्योंकि हमारे पास किसानों के लिए 2 प्रमुख कटाई के मौसम है और व्यापारियों के लिए नया लेखांकन सीजन तब तक आ जाता है। गणेश चतुर्थी के बारे में इन्होंने बताया कि गणपति, गणेश, लंबोदर, कितने नाम है उनके, 108 विकिपीडिया बताती है। उन्हें नई शुरुआत, बुद्धि और भाग्य का देवता माना जाता है। हमेशा नया कार्य शुरू करने के लिए हम बोलते हैं
गम गणपते नमः। क्या गणेश केवल कलात्मक कल्पना की उड़ान के बजाय किसी वास्तविक अस्तित्व या संस्थाओं के वर्ग का प्रतीक है? गणेश के नाम गणपति या विनायक में एक संकेत निहित है जो आकाशीय गणों के नेता के रूप में उन्हें कार्य को दर्शाता है। यह सम्मान उन्हें उनके पिता द्वारा मिला है। गणेश चतुर्थी कब आती है वो बहुत सामान्य बात है, सभी को मालूम है। भाद्रपद के चंद्रमा के शुक्ल चतुर्थी को वो आती है, लगभग अगस्त या सितंबर हो जाता है तब तक, और अनंत चतुर्दशी तक ये त्योहार चलता है। उनके जन्म को लेकर बहुत कहानियां हैं और भाई साहब ने इनमें से 5 जो कहानियां हैं उसको हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे। ये उन्होंने कहा है कि पहली कहानी ऐसी है कि शिव जो अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे रहे थे तो उन्होंने हल्दी और चंदन के लेप से एक टुकड़ा बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। दूसरी कहानी ऐसी है कि शिव अपनी शक्ति की खुशी के लिए एक बच्चे का निर्माण करते हैं, लेकिन जो पूरा शिव जैसा दिखता है इसलिए उनका चेहरा वो बदल देते हैं और हाथी का चेहरा लगा देते हैं। तीसरी कहानी है पार्वती घोर तपस्या से एक बालक का जन्म हुआ, विष्णु की घोर तपस्या की, तो जहां जहां वो जाती थी, बच्चा जाता था वहां उसकी माता भी साथ में चलती थी। माता जब बच्चे को देखती थी तो उसका सब बच्चों का सिर गिर जाता था, इसलिए त्रस्त होकर विष्णु ने उसके स्थान पर एक युवा हाथी का सर लगा दिया। चौथी कहानी एक है जो बहुत मानी जाती है कि एक बार जब पार्वती ने स्नान किया तो पानी को गंगा में फेंक दिया गया और पानी का हाथी के सिर वाली की देवी मालिनी ने पी लिया और उन्होंने 5 हाथी के सिर और 4 भुजाओं तक एक बच्चा का जन्म दिया। एक बार और 5वीं और अंतिम कहानी ऐसी बताई उन्होंने कि एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हाथियों के प्रेम से मोहित होकर शिव और पार्वती ने हाथी का रूप धारण किया और इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। किसी भी प्रकार से जन्म हुआ लेकिन वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, उसमें कोई देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया और 2 त्योहारों का, और नवरात्रि और दूसरी दीपावली। गुजरात में रहते हैं, नवरात्रि के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इससे अभी समय की मर्यादा के कारण हम जानते हैं कि 4 नवरात्रि होती है ये सब, लेकिन ये अलग सब्जेक्ट है। गणेश चतुर्थी के बाद जो बहुत बड़ा त्योहार आता है और अभी हाल ही में है वो है दीपावली। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले तक की जो सफर है वो बहुत सारे दीपक प्रकट करके हम उसको अंधेरे का, मन का अंधेरा और सृष्टि का अंधेरा निकालने की कोशिश करते हैं एक दीपक के माध्यम से। आध्यात्मिक संदर्भ में नवरात्रि सदियों की शुरुआत से पहले हर इंसान में प्रकृति की, स्त्री की ऊर्जा या नरम अप्रभावी ऊर्जा का आदत है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों जो स्त्री की ऊर्जा के प्रतीक है, इसमें हम नवरात्रि मनाते हैं। और जो स्थूल ब्रह्मांडीय प्रतीकवाद है गणेश पूजा का, इसमें एहसास होता है कि जो ट्रंक है, उनकी जो सूंड है, वो भीतर की शक्ति की ही एक इसका माध्यम है। सर्वोत्कृष्ट अनुभव उसका प्रतीकात्मक महत्व है। हमारा जो सब्जेक्ट है कि प्रतीकात्मक महत्व त्योहारों का, तो उनकी जो सूंड है गणेश जी की, उसमें बहुत ही ताकत है। योग्य प्रणाली में सुझाव दिया गया है जिसमें मूलाधार का मूल केंद्र है, नश्वर शरीर हाथी या गणेश से संबंधित है, साथ ही साथ रीढ़ के नीचे की हड्डी में उसका उन्मूलन केंद्र है। शिव और पार्वती ने हाथी का रूप धारण किया था ऐसा बताया गया और इस प्रकार उसका जन्म हुआ, इसलिए उनको गणेश भी बोलते हैं। ब्रह्मांडीय प्रतीकवाद में गणेश पूजा के कहते हैं कि गणेश उर्फ गणपति को आमतौर पर बड़ा पेट और छोटा चूहा उसका वाहन। बड़ा पेट सबकी बातें वो बड़े बड़े कान से सुन के अपने पेट में रख देते हैं, इसलिए उनका ये प्रतीक है। और उनका वाहन क्या है? बहुत छोटा सा चूहा, यानी वो बोलना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटी नहीं है। छोटी सी चूहा का भी मदद करके, किसी भी छोटी भी व्यक्ति को भी मदद लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका चित्र में ही देखना, छोटा चूहा तो जरूर रहेगा। यह सभी बाधाओं को पहुंचाने
और दूर करने की क्षमता का प्रतीक रखते हैं। पेट में सभी बाधा को पचा देते हैं और उसको सोंड से, अपनी सोंड से दूर कर देते हैं। चुनौतियां और चूहा की सबसे छोटी बाधाओं को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। सिंबल आ गया फिर से, सिंबोलिज्म। इन प्रतीकों का संयोजन गणेश के विचार को पुष्ट करता है कि आप सर्व प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी विघ्नों को विघ्नहर्ता कहा जाता है, बाधाओं को दूर करने वाला, और इससे आपको विघ्नेश्वर भी कहा जाता है। गणेश जी के बारे में बोला है। यूं तो भक्तों का मानना क्या है, स्थूल ब्रह्मांडीय प्रतीकवाद में गणेश पूजा के लिए क्या कहते हैं कि यूं तो भक्तों का मानना है कि गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आती बाधा एवं चुनौतियां दूर कर देते हैं। गम गणपते नमः, विघ्नेश्वराय वरदाय, कितने सारे मंत्र है गणपति को, जिसका पठन से हम अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जीवन में आती बाधाएं या चुनौतियां, चाहे वे व्यक्तिगत हो, अपनी खुद की पर्सनल हो, या फिर व्यावसायिक हो, अपने नौकरी धंधे की भी जो बाधाएं हैं, या आध्यात्मिक मामले से संबंधित हो। कोई बहुत मन में सोचते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तब भी वो भगवान को याद करते हैं, गणेश जी को। तो किसी भी प्रकार की जो चुनौतियां है, गणेश इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले देवता है। इनके भक्त शैव, वैष्णव, बौद्ध, सिख या जैन कोई भी हो सकता है। जो इन्हें सबसे पहले प्रसन्न करते हैं, उनसे उनकी मजदूरी मांगते हैं। सभी इंसान जो है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, किसी भी शादी ब्याह कुछ भी हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करके उनसे अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, भक्तजनों को लगता है कि ये हमारा काम, हमने इतनी भगवान की गणेश जी को पूजा किया लेकिन हमारे वो काम नहीं हुआ। लेकिन इनके बारे में इन्होंने बताया, पहले वो वक्ता ने, कि कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारे लिए ये काम हो जाए, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए भगवान द्वारा वो काम नहीं होता है। तो इस प्रथम भाग में उन्होंने जो जिस प्रकार से दिया, उस प्रकार का मैंने ये विवरण मेरी समझ के अनुसार किया है। थैंक यू वेरी मच। राइट ऑन टाइम आपने खत्म किया। ध्रुव भाई, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज गो अहेड विथ योर इंग्लिश वर्जन एंड एंटायर पार्ट। राजेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। राजेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। I must first thank the translators for doing a fairly good job. I'm trying to follow some of it, and yes, in fact, you've gone way ahead of what I had put in my first part of the presentation. And thanks to you, you've gone way ahead in your explanations. Now, coming to the connect with theosophy. Now, before I go on to the connect with theosophy, I would like to talk about Navaratri and the other festivals of Navaratri, as well as DEEPAVALI, two important festivals that we have here. Now, if you see in a spiritual significance, the Navaratri is a festival where there's this march of the soul in three major steps. They say that there are minor steps and there are major ones. There are many minor steps involved in these three major ones. And it is the march of the soul in many ways. And in this is this transformation of the spiritual being, of the aspiring soul. And to aid every individual is Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati. And these three are the presiding forces
that represent the powers of the spirit within manifesting themselves in an upward ascent towards freedom of the soul, and that being the ultimate that we look at. Now, consciously or subconsciously and subconsciously, we are related in another manner. We're all related in some manner or another manner altogether. Consciously, we people are seated at an event like this, for example. We all have a particular sort of relationship among ourselves, but consciously or subconsciously, our relationship are different altogether. For example, let's take the Zoom call. All of us have our own different priorities, but consciously we've all come together for this particular subject, for this particular talk, whether you like it or not. And subconsciously, we are all different human beings. All of us have our own priorities in life, and we all are different. But despite all that, the whole thing is to arrive at a conscious relationship, and deeper as we go, we try to arrive at this unity of life despite the diversity of the personality. Now, this is something which is seen in many facets of the Theosophical Society. Theosophy also aims at this. I'll go later into this. But before I go into that, I just want to talk about the Devi Mahatmya. And in the Devi Mahatmya, there is a lot of talk about how the soul psychologically and spiritually goes toward destination of the ultimate realization. And in this, we must understand that there is no individual movement here. It is a total movement of everything connected with us. No item in the world is really disconnected from us. It's like every thread in a cloth is connected with every other thread. When you lift one thread of a cloth, the whole cloth comes up because of the interconnection of the warp and the weft of the cloth. Similarly, this internal interconnection of beings, which prevents any kind of individual effort for the sake of salvation, there is an internal interconnection. That is why salvation is universal. It is not individual. And when you attain the Supreme Being, you become the universal being. Or, in other words, Aham Brahmasmi Tattvamasmi. So I hope I made that last sentence clear. There is no individual movement here. It is a total movement of everything connected with us, and no item in the world is really disconnected from us. This is the essence of Navaratri, and this is the essence of what the Theosophical movement is also about. Now, coming to Deepavali, as a term indicates, Deepavali or Diwali or Diwali, whichever spelling you give it, darkness is a term that indicates absence of light. For long, it was thought as the presence of evil, but it need not be necessarily so. More than a physical phenomenon that every person experiences daily, it has taken on many religious, psychological, and symbolic meanings. Darkness is multivalent. The darkness of ancient wisdom, of people of color, of space, of the womb, of the earth, of the unknown, of sorrow, of imagination, the darkness of death, the darkness of the human heart, of the unconscious, the darkness beyond light, the darkness of matter, of descent of the body, of the shadow of the Most High, goodness and evil, light and darkness coexist in every person. Following the pattern of ancient powers called the Devas and Asuras,
in the Vedic literature. And this is what ancient literature in the Rig Veda also talks about. And darkness in the theosophical literature is a term applied in different ways. It generally refers to the absolute. The universe is in a form of a pralaya, or the pre-cosmic principles, before the manifestation of the cosmos. According to the tenets of Eastern occultism, darkness is the one true actuality, the basis and the root of light, without which the latter can never manifest itself, nor even exist. Light is matter, and darkness pure spirit. I repeat, light is matter, darkness pure spirit. Darkness and its radical metaphysical basis is subjective, and absolute light, but the latter in all its seeming effulgence and glory is a mere mass of shadows, as it can never be eternal and is simply an illusion or Maya. The reviews of Madame Blavatsky, H.N. Thompson, and Carl Jung are notable here. Now, I'll take a break here. I'll go back to the presentation. I'll talk about Ganesha's connect with Theosophy, and I'll come back to Navaratri and the Diwali's connect with Theosophy. In the secret doctrine of Madame Blavatsky, the earth is spoken of in relation to the rudimentary sense of smell. The other senses are related to water, fire, air, and ether, and are said to be fused in the sense of smell, the last of the series to evolve. And related to this powerful sense is that form of memory associated with the psychic realm and also pertaining significantly to the libido. The Ganesha connect comes from him being a symbol of all these characteristics, which I just now said. Ganesha is a characteristic of fire, air, ether, water, and smell. And Ganesha, being a symbol of all these characteristics, embodies the power of the Akashic and the lower astral realm brought down to earth. Whereupon he stands at the entrance of the path. He represents the divine wisdom as well as the worldly wisdom. The crucial link, or the antaksharana, between them and the timely manifestation of the Brahma Vacha in daily life. Now, when we look back in the encyclopedial theosophical glossary, this gives us a clue to Ganesha's role in the hierarchy of more advanced spiritual entities who play an active and self-conscious role in the management of the cosmos. In some aspects, he is the chief or the head of multitudes or subordinate spiritual entities. A necessity if, as a god of wisdom, he accomplishes his cosmic labors through subordinate hierarchies of intelligent and semi-intelligent beings acting as their director or guide, informing and guiding nature. I'll repeat this whole passage again. I will make it simpler. The Theosophical Glossary speaks about various advanced spiritual entities which are active and self-conscious in their role of management of the cosmos. And Ganesha, being the head of all the spiritual entities, or being the Gana, the chief Gana, who's in charge of the cosmos. He is in charge of the cosmos and he accomplishes all his cosmic labor with intelligence and semi-intelligence being. And he is the director or guide informing the guiding nature.
Perhaps the real Ganesha is more like a force of nature, like the sunlight that nourishes life, the air we breathe, the lofty thoughts that inspire us. He's part of the great chain of being stretching from the spiritual sun down to humanity and beyond. This hierarchy of compassion sustains life for us lesser beings, though we remain unaware of the constant efforts, or call them, as modern science often does, unconscious forces of nature. Ganesha and his celestial hordes work consciously and untiringly so that we may learn and grow spiritually to one day join them in their cosmic labors. And their cosmic labor is, as mentioned in the last slide, cosmic labor is to guide us through the spiritual path and give us the wisdom and subordinate hierarchy of intelligence and intelligent beings, and act while acting as the director or guide in forming and guiding nature. Now, before I go on to this slide, I will have to go to the text of the Navaratri connection with Theosophy and the connect with of Deepavali also. Now, Carl Jung, one of the famous psychic, person into psychic philosophy, he was one of the famous psychic philosophers of the 19th and 20th century. And Blavatsky and E.L. Thompson have written a lot about this. Carl Jung devoted a considerable study to the concept of darkness. The psyche of man is a microcosm of the world and contains opposites of light and dark. What is denied is the thrust into unconsciousness and lives its secret within the shadows of one's life. Each of us has a shadow side and a masculine or feminine counterpart within us, animus or anima, created in the natural thrust of the law of opposites. The integration of the shadow and the bisexual nature of the psyche is essential in the path of individuation. A good example here, which I have not quoted here, just to understand the concept of where Lord Shiva and Parvati fuse into one. And that is Ardhanarishwara. Now, in the Ardhanarishwara form, you will see. Am I audible? Yes. Okay. Now, as Carl Jung says, I'll repeat what Carl Jung says. The psyche of man is a microcosm of the world. It contains opposites of light and dark. And what is required is this thrust into the unconsciousness and life's its secret within the shadows of one's life. Now, he says that every human being has a shadow side to them, masculine or feminine part of it, and which we call as animus or anima, and a natural thrust. Now, in other words, every human being is like an Ardhanarishwara. He has both to him, the masculine and the feminine parts to it. And it is in finding that equilibrium that we become better human beings. And this applies to our families also. Sometimes it is the masculine energy which dominates in the house. Sometimes it's the feminine energy that dominates in the house. At the end of the day, it is this equilibrium we strike between these two forces. You may call it the dominant energy
or the recessive energy. You may call it masculine, feminine, you call it any name you want it. But it is a balance of these energies which make our lives better. In the Hindu system, we call it as the Ida and the Pingala. In the Chinese system, it's called as the Yin and the Yang. Now, HPB in the context of universal principles, she says darkness is used to refer to those principles that are beyond our comprehension, so that they appear as darkness to our minds. The source is unknown, though is strongly demanded by reason and logic. Therefore, it's called darkness. That's very beautifully put. The word darkness is used to refer to principles beyond our comprehension, so that they appear as darkness to our minds. The source is unknown, though is strongly demanded by reason and logic. Therefore, it is called darkness by us. From an intellectual point of view, it is darkness most unquestionably to our intellect, inasmuch as we can know nothing of it. I told you already that neither darkness nor light are to be used in the sense of opposites. It's in the differentiated world. Now, talking about darkness, recent studies of space have brought about a thing called as dark energy and dark matter. The dark matter is what we call as darkness, which HPB very rightly said almost a century ago, is something that is beyond our comprehension. And to date, the dark matter and the dark energy of the universe, or rather of the multiverse, is beyond our comprehension. We still do not know what dark matter is. We still do not know what dark energy is. But we know that majority of the universe is made up of dark matter and dark energy. And perhaps one fine day, we will realize what it is. At the level of these universal principles, we're not talking about light or its absence. Therefore, this darkness is not the opposite of light. In the sense of objectivity, both light and darkness are illusions, Maya in this case. It is not darkness as absence of light, but as one incomprehensible primordial principle, which being absoluteness itself has for our intellectual perceptions neither form, color, substantiality, nor anything that could be expressed by words. The term darkness is sometimes used in a very relative way, in using figurative language, as is being done in the secret doctrine. Analogies and comparisons are very frequent. Darkness, for instance, as a rule, applies only to the unknown totality or absoluteness. Contrasted with eternal darkness, the first logos is certainly light. Contrasted with the second or the third, the manifested logos, the first is darkness and the others are light. In the same way, it can be said that what is darkness to the regular mind may not necessarily be so to the mystic or the adept. It is this absolute darkness of the scientific mind, but a grey of twilight to the perception of the average mystic. So, to that of the spiritual eye of the initiate, it is absolute light. The last two paragraphs of this, I will, before I go to the last two paragraphs, I just want to repeat about Madame HPB's view on darkness. Just quickly recapping what she said. Darkness is not the opposite of light. It is basically a sense of objectivity. Both light and darkness are illusions, and Maya in this is basically Maya. And she says darkness is not the absence of light. Although we perceive it to be the absence of light, she says it's not. But it is something which is beyond comprehension. And as she mentions in the secret doctrine, darkness
is contrasted with, light is contrasted with eternal darkness. And she says the first logos is certainly light. But when you contrast that with the second and third manifested logos, the first becomes darkness. So therefore, this whole thing of darkness changes with our perception. And what is darkness to the regular mind may not be darkness to the mystic or the adept. Therefore, it is absolute darkness of the scientific mind, but a great twilight to the perception of average mystic. Though to that of the spiritual eye, initiated as absolute light. So what may be absolute darkness to the scientist may be light to the spiritual person. In the book of E.L. Thompson, written way back in 1939, the book is called The Absolute. The ultimate darkness is the absolute reality. I'll repeat that first line. The ultimate darkness is the absolute reality, which cannot be perceived even by the logos. The absolute being is the source of everything in theosophical literature. It is said that darkness is the source of light. If the absolute deity can be referred to as darkness or dark fire, the light, its first progeny, is truly the first self-conscious God. For the occultist and the Rosicrucians of the Middle Ages, and even the medieval Kabbalists, said that our human perception, and even to that of the highest angels, the universal deity is darkness. And from this darkness issues the logos. But esoterically, it is darkness itself, the unknowable absolute, which is the source. Firstly of the radiation, called the first logos, then its reflection, the dawn of the second logos, and finally of Brahma, the manifested light, or the third logos. Thus, darkness is regarded as eternal, while the appearance of light or manifestation is a non-eternal phenomenon occurring periodically. I think our festival of Deepavali cannot be explained in a better way with the spiritual context of theosophy. As he says, the ultimate darkness is absolute reality. The absolute being is the source of everything, and the absolute being is darkness. And when the first light comes, it is the dawn, and then comes the second logos, and finally Brahma, who is the manifested light. Now, another topic which Madame Blavatsky speaks about is on the concept of a pralaya. A pralaya, as in darkness, can represent a time of absolute rest. Darkness is taken as the symbolic allegorical representation, the condition of the universe during a pralaya, or the term of absolute rest or non-being as it appears to our finite minds. When the whole universe is plumbed in sleep, had returned to its primordial element, there was neither center of luminosity nor eye to perceive light, and darkness necessarily filled the boundless all. Now, this concept of a pralaya has different interpretations. Some call a pralaya as destruction, some call pralaya as eternal sleep, where the absolute rest happens. Now, in our understanding, in the theosophical understanding, it can be both. It can be in a sense where there's absolute rest, and when there is absolute rest, let us understand there's absolute confusion also. Because for a moment, let us assume that the whole world stops to function. The whole universe stops to function. The earth stops to rotate. The earth stops to revolve around the sun stops to shine. What would happen? In the theosophical sense, it is absolute rest. But in the finite sense,
is absolute confusion, an absolute destruction. So it can be interpreted in both ways. Symbolic meaning of darkness. Darkness and blackness have innumerable associations, like light and darkness, has a wide range of symbolic meanings. And when I say light and darkness, there's no such thing called black light. Let me tell you that. The concept of black light doesn't exist. So darkness and blackness have innumerable associations. Like light, darkness has a wide range of symbolic meanings. The color lac can signify the stage just before enlightenment in Tibetan Buddhism. Imminence, space, burning, the final stage of the soul's journey, the beatitude in a Sufi tradition, wisdom, fertility in old Europe, purity in the Turkish tradition, mourning in the West, and the first step in the medieval alchemical process, the Macroscopic. So, across civilizations, darkness has different meanings. It's only the Western thinking process. We call it mourning, we call it black, bad, but across other civilizations, darkness, like light, has different symbolic meanings and it can signify various things. As I said, in Tibetan Buddhism, it's imminence, space, burning, the final stage of a soul's journey to beatitude. In the Sufi tradition, wisdom, fertility in old Europe. In Turkish tradition, mourning in the West, and the first step, the medieval alchemical process, the Macroscopic. With this, I would like to close this topic. Thank you so much. I would like to just end this with some mantras and thoughts. I think we can do that when the two speakers are finished. We will have some time. Yes, sir. Okay, sir. Okay. That would be a right moment for ending Yes. it. Okay. Yes, sir. Please go ahead, KAUSTUBH. Thank you. I'll start from where I had ended at that time. Yes, sir. Yes, sir. दीपावली उर्फ दिवाळी. अंधार ही एक संज्ञा आहे जी प्रकाशाची अनुपस्थिती किंवा वाईटाची उपस्थिती दर्शवते. प्रत्येक व्यक्ती दररोज अनुभवत असलेल्या भौतिक घटनेपेक्षाही अनेक धार्मिक, मानसिक आणि प्रतिकात्मक अर्थ घेत आहे. Hello. Yeah. Just your mic, sir. Yeah. Yeah. Now you can. Yes, sir. Yeah, sorry. No problem. अंधार हा बहुआयामी आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. प्राचीन शहाणपणाचा अंधार, रंगाच्या लोकांचा, अवकाशाचा, गर्भाचा, पृथ्वीचा अशा विविध पद्धतीने त्या अंधाराकडे बघता येतं. वैदिक साहित्यामध्ये देव आणि असुर नावाच्या प्राचीन शक्तींच्या नमुन्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीमध्ये चांगुलपणा आणि वाईटपणा म्हणजे प्रकाश आणि अंधार असतातच. थिओसॉफिकल साहित्यात अंधार हा शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे वापरला जातो. हे सामान्यतः निरपेक्ष प्रलयामधील विश्वाचा किंवा ब्रह्मांडाच्या प्रकट होण्यापूर्वीचा पूर्व वैश्विक तत्वांचा संदर्भ देते. ईस्टर्न ऑकल्टिझमच्या सिद्धांतानुसार अंधार ही एक खरी वास्तविकता आहे आणि वास्तविकता आधार आणि प्रकाशाचे मूळ आहे, ज्याशिवाय नंतरचे कधीही प्रकट होऊ शकत नाही किंवा अस्तित्वात देखील नाही. प्रकाश हा पदार्थ आहे आणि अंधार हा शुद्ध आत्मा आहे. अंधार त्याच्या मूलगामी अधिभौतिक आधारावर व्यक्तिनिष्ठ आणि परिपूर्ण प्रकाश आहे. नंतरचे सर्व तेजस्वीपणा आणि वैभवात केवळ सावल्यांचे समूह आहेत, कारण ते कधीही शाश्वत असू शकत नाही. कार्ल जंग यांनी अंधाराच्या कल्पनेवर बराच अभ्यास केला आहे. जगाचे सूक्ष्म जग म्हणून मनुष्याच्या मानसात प्रकाश आणि अंधाराचे विरोधाभास आहेत. आपल्यापैकी प्रत्येकाची सावलीची बाजू असते आणि आपल्यामध्ये एक पुरुष किंवा स्त्रीलिंगी प्रतिरूपही असते. सावलीचे एकत्रीकरण आणि मानसातील उभयलिंगी स्वभाव वैयक्तिकतेच्या मार्गात आवश्यक आहे, म्हणजे इंडिव्हिज्युअलिस्ट. HPV सार्वभौमिक तत्वाच्या संदर्भात म्हणतात,
अंधार हा शब्द त्या तत्वांचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो जे आपल्या आकलनाच्या पलीकडे आहेत, जेणेकरून ते आपल्या मनात अंधार म्हणून दिसतात. कारण आणि तर्काने जोरदार मागणी केली असली तरी स्रोत अज्ञात आहे, म्हणून बौद्धिक दृष्टिकोनातून त्याला अंधारच म्हणतात. आपल्या बुद्धीसाठी तो निसंशयपणे अंधार आहे, कारण आपल्याला त्यातले काहीच कळत नाही. मी तुम्हाला आधीच सांगितले आहे की भिन्न जगाप्रमाणे अंधार किंवा प्रकाश या दोन्हीचा उपयोग विरुद्धार्थी अर्थाने केला जाणार नाही. या सार्वत्रिक तत्वांच्या पातळीवर आपण प्रकाश किंवा त्याच्या अनुपस्थितीबद्दल बोलत नाही, म्हणून हा अंधार प्रकाशाच्या विरुद्ध नाही. वस्तुनिष्ठतेच्या अर्थाने प्रकाश आणि अंधार दोन्ही भ्रम आहेत, केवळ माया. ते प्रकाशाची अनुपस्थिती म्हणून अंधार नाही, तर एक अगम्य आदिम तत्व आहे जे स्वतःच निरपेक्षता असल्याने आपल्या बौद्धिक जाणीवेसाठी कुठलेही रूप, रंग, वस्तुनिष्ठता किंवा शब्दांद्वारे व्यक्त करता येणारी कुठलीच गोष्ट नाही. अंधार हा शब्द कधी कधी सापेक्ष पद्धतीने वापरला जातो. अलंकारिक भाषेचा वापर करताना द सिक्रेट डॉक्ट्रिन मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे उदाहरणार्थ अंधार नियम म्हणून केवळ अज्ञात संपूर्णतेला किंवा निरपेक्षतेला लागू होतो. शाश्वत अंधाराशी विरोधाभासी पहिला लोगॉस नक्कीच प्रकाश आहे. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या विरोधाभासी प्रकट लोगॉस पहिला अंधार आहे आणि इतर प्रकाश आहे. त्याच प्रकारे असे म्हटले जाऊ शकते की नियमित मनासाठी जे अंधार आहे ते गूढवादी किंवा पारंगत व्यक्तीसाठी आवश्यक नाही, अंधार नाही. वैज्ञानिक मनासाठी तो पूर्ण अंधार आहे आणि सरासरी गूढवादी आकलनासाठी एक राखाडी संधी प्रकाश आहे, म्हणजे ग्रे. जरी आरंभाच्या आध्यात्मिक डोळ्याच्या दृष्टीने तो पूर्ण प्रकाश आहे, अंतिम अंधार हे निरपेक्ष वास्तव आहे जे लोगॉसद्वारे देखील समजू शकत नाही. निरपेक्ष प्रत्येक गोष्टीचा उगम आहे. थिओसॉफिकल साहित्यात असे म्हटले आहे की अंधार हा प्रकाशाचा स्रोत आहे. जर निरपेक्ष देवतेला अंधार किंवा गडद अग्नी असे संबोधले जाऊ शकते, तर प्रकाश त्याची पहिली संतती, खऱ्या अर्थाने पहिला आत्मजागरूक देव आहे. ऑकल्टिस्टसाठी मध्ययुगातील रोजक्रॉइस्ट आणि अगदी मध्ययुगीन कबालवाद्यांनी सांगितले की आपल्या मानवी कल्पनेनुसार आणि अगदी सर्वोच्च देवदूतांच्या सुद्धा सार्वत्रिक देवता हा अंधार आहे आणि या अंधारातून लोगॉस तयार होतात. परंतु गूढतेने तो स्वतःच अंधार आहे, अज्ञात परिपूर्ण जो स्रोत आहे. प्रथम लोगॉस नावाच्या किरणोत्सर्गाचा, नंतर त्याचे प्रतिबिंब पहाट किंवा दुसरे लोगॉस आणि शेवटी ब्रह्माचा प्रगट झालेला प्रकाश किंवा तिसरा लोगॉस. अशा प्रकारे अंधार हा शाश्वत मानला जातो, तर प्रकाशाचे स्वरूप किंवा प्रकट होणे ही अधूनमधून घडणारी अनंत काळची घटना आहे. प्रलय. मॅडम ब्लॅवॅट्स्कीच्या मते अंधार पूर्ण विश्रांतीचा काळ दर्शवू शकतो. अंधार हे प्रलया दरम्यान विश्वाच्या स्थितीचे योग्य रूपकात्मक प्रतिनिधित्व म्हणून घेतले जाते, किंवा पूर्ण विश्रांतीची संज्ञा किंवा नसणे जसे आपल्या मर्यादित मनांना दिसते. जेव्हा संपूर्ण विश्व झोपेत बुडाले होते, त्याच्या एका आदिम तत्वाकडे परत आले होते, तेव्हा प्रकाशाचे केंद्र नव्हते. प्रकाश पाहण्यासाठी डोळाही नव्हता आणि अंधाराने अपरिहार्यपणे सर्व अमर्याद भरले होते. अंधाराचा प्रतिकात्मक अर्थ. अंधार आणि काळेपणा यांच्या असंख्य संगती आहेत. प्रकाशाप्रमाणेच अंधाराचाही लाक्षणिक अर्थाची विस्तृत श्रेणी आहे. रंगाचा अभाव तिबेटी बौद्ध धर्मात ज्ञानप्राप्तीपूर्वीचा टप्पा असंही दर्शवतात. सुफी परंपरेतील आत्म्याचा प्रवास अंतिम टप्पा, शहाणपण, जुन्या युरोपमध्ये प्रजनन क्षमता, तुर्की परंपरेत शुद्धता, पश्चिमेकडे शोक आणि मध्ययुगीन अल्केमिकल प्रक्रियेतील पहिली पायरी
निग्रेडो, हे सगळे अंधाराचाच प्रकार आहेत. जेवढा भाग त्यांनी वाचला होता तेवढा भाग माझा वाचून झालेला आहे. सो धन्यवाद. I think Rajeshwari ji, you can go ahead. I'll just spotlight you. Yeah. And afterwards, any one of you wish to share something, you can share. All three speakers. Thank you. Yeah, please go ahead. मेरे से पहले दो वक्ताओं ने ये दो त्योहार के बारे में बताया. अब मैं उस पर थोड़ा और कुछ बोलूंगी उन्हीं के बारे में. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नवरात्रि की ये जो श्लोक है उसके बारे में उन्होंने बताया कि नवरात्रि आत्मा की यात्रा 3 प्रमुख चरणों में है. कई छोटे चरण भी शामिल है. छोटे छोटे चरण होते ही आगे बढ़ते हैं, जबकि हमें विकास की सीढ़ी के विभिन्न पायदानों से ऊपर उठना है. हम 3 बिंदुओं या पड़ाव स्थानों पर आते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जहां हमारे दृष्टिकोण और संविधान का पूर्ण परिवर्तन होता है. आकांक्षी आत्मा के आध्यात्मिक अस्तित्व के इन 3 गुना परिवर्तनों पर 3 देवताओं का प्रभुत्व या अध्यक्षता होती है, जिन्हें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के नाम से जाना जाता है. ये 3 प्रमुख शक्तियां हैं जो आत्मा की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है और जो स्वयं को परम स्वतंत्रता की ओर और ऊपर की ओर प्रकट करती है ताकि आत्मा भी स्वतंत्र रहे. वे अपने साथ वह सब कुछ ले आए जो उसके साथ जुड़ा हुआ है. इस रिश्ते के भी 4 चरण है. चेतन रूप में हम एक विशेष तरीके से संबंधित है और अवचेतन में रूप में हम पूरी तरह से दूसरे तरीके से संबंधित है. उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग सचेत रूप से आपस में एक विशेष प्रकार का रिश्ता रखते हैं, लेकिन अवचेतन में रूप में हमारे रिश्ते बिल्कुल अलग तरह के होते हैं और उन्हें हमारे सचेत रिश्ते से मेल खाने की आवश्यकता नहीं है. और इससे भी अधिक गहराई में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ऐसी परत है जो विविधता की तुलना में जीवन की एकता से अधिक करीब है. चौथा चरण जो है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता. हम नहीं जानते कि हम इसे एकता कहें या विविधता कहें या एकता या अन्यता. यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर आत्मा अग्रसर है. तो देवी महात्मा के वर्णन में हमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से अंतिम प्राप्ति के हमारे गंतव्य के ओर आगे बढ़ाया जाता है. यहाँ कोई व्यक्तिगत हलचल नहीं है. यह हमसे जुड़ी हर चीज का संपूर्ण संचलन है और कपड़े का जैसे हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा होता है और एक धागा उठाते हैं तो कपड़े के ताने बाने परस्पर संबंध के कारण पूरा कपड़ा जो ऊन से करते हैं, हम देखते हैं कि जरा सा निकालो तो पूरा निकल जाता है. इसी प्रकार प्राणियों का एक आंतरिक अंतर संबंध है जो मोक्ष के लिए किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व पर्याय का हो सकता है. मोक्ष सार्वभौम है, व्यक्तिगत नहीं है. तो आप सार्वभौमिक सत्ता बने रहते हैं. नवरात्रि के बारे में बात करते हुए उन्होंने शक्तियों के जो महाकाली, महासरस्वती के बारे में भी बात किया और उसके बाद में उन्होंने जो त्योहार का नाम लिया वो दीपावली. श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने को एक बार सूर्य अस्त हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि अब मेरे जाने के बाद ये काम कौन करेगा. तो एक छोटे से दीपक ने बताया कि सर मैं कोशिश करूंगा. इसी प्रकार से ये जो छोटा दीपक हम दीपावली में जलाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे मन की और तन की और सारे संसार की जो अंधेरा है उसको हम ये छोटे छोटे दीपक से हम दूर कर देते हैं. अंधकार एक ऐसा शब्द है जो प्रकाश की अनुपस्थिति या बुराई की उपस्थिति को इंगित करता है.
अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति है। प्रकाश है जरूर, लेकिन वहां वो नहीं है। एक भौतिक घटना अधिक जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अनुभव करता है। इसने कई धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अर्थ से लिए हैं। अंधकार बहुसंख्यक है। प्राचीन ज्ञान का अंधकार, रंग के लोगों का, अंतरिक्ष का अंधकार, गर्भ का अंधकार, पृथ्वी का, अज्ञात का, दुख का, कल्पना का, मृत्यु का, मानव हृदय का, अचेतन का, प्रकाश से परे अंधकार का, पदार्थ का और परापदान की छाया का। वैदिक साहित्य में देव और असुर कहलाने वाली प्राचीन शक्तियों के पैटर्न का अनुसरण करते हुए अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार हर व्यक्ति में सह अस्तित्व में है। एक साथ दोनों चीजें चलती रहती है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान हमेशा के लिए अच्छा भी नहीं हो सकता। थियोसॉफिकल साहित्य में अंधकार एक शब्द है जिसे विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति से पहले प्रलय में ब्रह्मांड या पूर्व ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का संबंध संदर्भित करता है। पूर्व भोगयता के सिद्धांतों के अनुसार अंधकार की यह एक सच्ची वास्तविकता है। प्रकाश का आधार और मूल है, जिसके बिना प्रकाश कभी प्रकट हो ही नहीं सकता, न ही अस्तित्व में है। प्रकाश पदार्थ है और अंधकार शुद्ध आत्मा है। अंधकार अपने मौलिक आध्यात्मिक आधार में व्यक्तिगत और पूर्ण प्रकाश है, केवल छायाओं का एक समूह है, क्योंकि यह कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता है और केवल एक भ्रम की माया है। श्री H.P. ब्लेवेट्स्की और थॉमसन और कार्ल जंग उसके बारे में योग्य उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि अंधेरे की अवधारणा पर काफी अध्ययन करो। संसार में सूक्ष्म जगत के रूप में मनुष्य का मानस में प्रकाश और अंधकार के विपरीत तत्व समाहित है। जिसे अस्वीकार किया जाता है उसे बेहोशी में धकेल दिया जाता है। हम में भी जैसे है कि प्रत्येक के पास एक छाया पक्ष है और हमारे भीतर एक मर्दाना या स्त्री समकक्ष एनिमस या एनिमा है, जो विपरीत कानून के प्राकृतिक जोर से बनाया गया है। व्यक्तित्व की राह में छाया और मानस की उभयलिंगी प्रवृत्ति का एकीकरण अति शुक्र है। ब्लेवेट्स्की कहते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांतों के संदर्भ में अंधकार शब्द का उपयोग इन सिद्धांतों को संबंधित करने के लिए किया जाता है जो हमारी समझ से परे है, जिससे हमारे दिमाग में अंधकार के रूप में दिखाई देते हैं। स्रोत अज्ञात है, हालांकि कारण और तर्क के द्वारा उसकी जोरदार मांग की गई है। इसलिए बौद्धिक दृष्टिकोण से हम अंधकार कहते हैं। यह हमारी बुद्धि के लिए निर्विवाद रूप से अंधकार है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने कहा था कि न तो अंधकार का उपयोग करना है और न ही प्रकाश का। थियोसॉफी के साथ ये दोनों त्योहारों का एक साथ जोड़ना होता है, और इसी साथ ये मेरा जो ट्रांसलेशन है वो खत्म करती हूँ मैं। So much, आपने राइट ऑन टाइम पूरा दिया। तीनों वक्ताओं से मैं कहूँगा कि आप जिस भी भाषा में भी कुछ और कहना चाहते हो तो जस्ट ऐड कर सकते हैं, फिर मैं पब्लिक के पास आता हूँ। हर्षवर्धन जी हैं और सुधीर जी भी हैं, तो जैसा भी Dhruv, you want to add something? Kaustubh bhai, you want to add something? नहीं, You can add in the language of your choice. Shinde ji, धन्यवाद। go ahead. Whatever I have gathered up till now about this symbology, so various deities which have been shown in Indian, I wouldn't say mythology because most of it is not myth, it is reality, is that
all these things are being indicated in various ways. Like, say, a shankh is shown as the sound. Another thing is maybe gada, which shows the strength or the possibility of hitting the wrong things. All these things are indicated in the picture of a deity, and I think they are very, very important symbols in that particular respect. So all, just because people wouldn't understand, just like a picture says is equivalent to 1,000 words, the deity's picture or the deity's how it is shown explains it in one single shot. Just a look at the deity's picture or the deity's expression gives you a lot of things in one single go. So a lot of symbology is being used in Indian literature, Indian philosophy per se. Thank you. Thank you, sir. Yes, Dhruv, wish to add something? You will. Nothing really. I think it has been epitomized well by Sri KAUSTUBH ji. He has done it very well. I will simply endorse his view on this. I just have a final thing to add mantras on Ganeshaya, as well as a quote from Swami Vivekananda's speech. Can I go ahead? Yeah, please go ahead. This is okay. Some of the since this was done much earlier, this presentation, so just wanted to share some of the quotes. This is Om Gam Ganapataya Namaha, Om Shri Ganeshaya Namaha, Om Shrim Hrim Gleem Glaum Glum Ganapataya Paravarada Sarvajanam Me Vashamanaya Swaha. Om Hrim Shrim Hrim Glaum Glum Ganapataya Vadamage Sarvavaishan Varya Varya Om Swaha. These are some of the usual Ganesha mantras. The thought I would share of Swami Vivekananda is, he says, "O children of India, out of the past is built the future. Look back, therefore, as far as you can. Drink deep of the eternal fountains that are behind. And after that, look forward, march forward, and make India brighter, greater, much higher than she ever was. Our ancestors were great. We must recall that. We must learn the elements of our being. The blood that courses in our veins, we must have faith in the blood and what it did in the past. And out of that faith and consciousness of past greatness, we must build an India greater than what she has been." Swami Vivekananda. Yes, Uday bhai, you had raised hand first, so you can go ahead. 1 minute each, and maybe it is already 8:21. So let's. Unmute Uday bhai. हाँ, बहुत बहुत आभार ध्रुव भाई, कौस्तुभ भाई बड़बड़े और राजश्री बहन, जो कौस्तुभ बड़बड़े हमारे साथ एडीआर में थे, उसको आज सुनने से बहुत प्रसन्नता हुई। और राजश्री बहन जो ज्यादा तो गुजराती में सुनाते, लेकिन आज वो हिंदी में सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। जो उत्सव बढ़ाता है उसको उत्सव कहता है। मनुष्य मात्र को उत्सव प्रिय है। काशी में एक बार विद्वानों की सभा हुई थी कि भाई एक वर्ष में कितना उत्सव मनाए, इसलिए वो विद्वान एकत्र हुआ, तो उसने तय किया कि भाई एक साल में हम 462 उत्सव मनाए। साल का दिन 365 और नतीजा हुआ कि भाई 465 मनाए। ये ऐसा ही मनुष्य मात्र कई तरीका से उत्सव मनाते और अपना पंथ संप्रदाय मंडल वगैरह अपने अपने सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। गणेश उत्सव के बारे में तो बहुत ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने देश की आजादी की चळवळ में लोगों को जुड़ाने के लिए उसका प्रयोग किया, और ये गणेश उत्सव को उससे जुड़ के स्वतंत्र आंदोलन को बड़ा वेग दिया था। नवरात्रि के बारे में बताया, वो बात
की शक्ति की उपासना है। जैसा कि सरोजिनी नायडू ने बताया था एनी बिसेंट को अंजलि के बारे में कि डॉक्टर बेसेंट महालक्ष्मी पार्वती महाकाली और सरस्वती का वो संयोजन था। तो वो शक्ति का संयोजन अपना एनी बिसेंट में था। तो वो उससे हमको प्रेरणा लेना है। तो ऐसा ऐसा कई तरह का उत्सव सिंबोलिज्म बताया गया, बहुत प्रसन्नता हुई। और गुजराती में इस भजनी को गाते हैं कि गुरु ने चरण में हमारे कायम छे दिवाली। गुरु के चरणों में हमारे कायम दिवाली होती है, मतलब प्रकाश होता है, हमारा अज्ञान दूर होता है, हमारा उजाला होता है। तो ये दीपावली का बहुत महत्व है। और आज ये विषय को पसंद करके वक्ताओं ने जो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, और सबका अभिनंदन और अभिवादन। हेलो, या आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ, By the time Shindeji gets in, I think you can just sum up if you wish to speak something. Ashwin भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है। Is Sindhu? Let us listen to Sindhu first. Yeah, but I don't think my He's voice. there. He's there. I am there. I am there. Go ahead, sir. रियली तरल भाई, आपने आज तो फेस्टिवल अरेंज किया. दिस इज ऑल फेस्टिवल एक्चुअली. वी एंजॉयड एंड सो डीपली ध्रुवा हैज गॉन and so many things he connected with the Theosophical Society and scientific background behind it. So all festivals which we know, Pongal, Diwali, Raksha Bandhan, Navaratri, Holi, Christmas, New Year, all these are the festivals, indicates the human mind which is becoming more and more social, wanted to get connected and not to be isolated. So all national festivals are also important in that sense, as we celebrate in India Independence Day and Republic Day. And as Dhruva suggested, life is both dark and light. Means life is dark in the light and light in the dark. So when you understand this, there is a alternate circulation is there, and this is very well symbolized by the long back, means 1200 years ago, by Christian, that is yin and yang symbol, which indicates life is both dark in the light and light in the dark. He has very well explained. I am very happy and enjoyed it. Thank you very much, Dhruvaji. Very nice studied. And I also thanks KAUSTUBH BHADBHADE. He tried very well and explained all that what Dhruva wanted to say. And what can I say about the Dviveji? She is already experienced one, and we could listen her very clearly. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Shindeji, yes, Ashwin. Right. Yes, Dhruvaji, I congratulate you, and you have selected this wonderful subject, and very nicely translated in Hindi by Rajeshwari ji and in Marathi, KAUSTUBH bhai, well done. Symbolically, we are really connected with the festivals. It is also socio-economical status of the festival. If we celebrate the festivals, we come together. We have all the differences, but we are united when we celebrate the festival. And our country is the country of festivals. So many festivals, local festivals, state festivals, national level festivals, so many. And festivals like Diwali, Ganesh Chaturthi,
Holi. These festivals have the symbolical meaning, symbolical importance, and when we celebrate, it is the part of our life. And our life, our daily life, our jubilation, our celebrations of any kind, that is highly connected with that. And moreover, we get a kind of inspiration. We forget sometimes enmity. No, holy hai when we say, we forget enmity. There is the equality in the society. When we celebrate Ganesh Chaturthi, it is highly symbolical. Some myths are there. You really illustrated those 5 stories which are really important, and we find that the symbolical aspect is very wonderful. I like this word. People just I came to know about this. Uh, Catching hold of the lobes and then praying to Ganesha is really wonderful. It affects our concentration and it makes us really very humble. And when we prostrate before the deity, it gives a lot of joy and happiness, which is really very unique. So it is wonderful. Regarding the myth here, one specialized account is here that I came to know. Myth is an account of the movements of those who cast the shadows and the language in which the account is given in what is called the language of symbols. This is the particular thing because festivals are also connected with the symbols, with the mythological stories, and elaborated kinds of celebrations. So really it is wonderful. So far as the time is very less and I congratulate you. And Shindeji, you explained very well and it is really Yes. worth that we listen to the remarks. Yes, lastly, whatever the remarks are there, they are also very valuable in Triveni program. Saraji, you are there in the way that you connect everyone, whether you are in Varanasi, whether in Bombay, whether anywhere else. This Triveni program is never in that way off the line. It is always online. So that is wonderful. Congratulations, all of you. Thank you. And I think Atul Bhai, you can go for the. અર્ચનાબેન આપણને શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तादिनाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Oh.